service organization or manufacturing organization. Okay, ma'am. But today I'll be continuing with the project management. This is the last part where we'll be talking about resource allocation, then from allocation to leveling and leveling to smoothing. Every time it is not possible to do the smoothing, but leveling you have to learn, because without that, the resources, if there is some constraint, that won't be maintained. Ansaj has also come. Good evening, Ansaj. Open your camera. Good evening, ma'am. Good evening. So today we'll be doing resource allocation, resource leveling, and resource smoothing. Let's wait for some time for the others to come. Only two of you have come, Shivam and Anshaj. Ma'am, please send me the PPT of the thing that we have done, networking. I have sent you the PPT. I don't think I have sent you the PPT because your email address is not PPT. I'm off Sunday, and the course that we have completed on Sunday. Sunday, so we had done project crashing. So, ma'am, that PPT you are having? I'm having, of course, I'm having. You send me your email address, I'll send all the PPTs to you. Okay, okay. Okay, okay. Because this is something, project management is something you can use anywhere. Whether you're doing a project for your house or you're doing a project for your organization, whether you are in healthcare, whether you are in solar energy, whether you are in automobiles, whether you are in e-commerce, whatever it is, the project. And even if you are applying for bank loan, so you have to draw a project and give it to them. So they'll know exactly what all activities you will be doing, and it will be easier for you also to know for each activity what resources do you require in terms of money as well as cost. And this project leveling is not given in too many books. Like you. Good evening, ma'am. Good evening. Sorry for late. I can't see you, Shashi. It is Shashi. No, I am Subir, ma'am. Okay, Subir. Okay. So open, all of you, open your camera. Hello. Hello, Meghna. Good evening, ma'am. Good evening. Yes, ma'am. Currently, I'm outside, so I won't be able to interact. I won't be able to speak much. But I'm joining. I'm listening to you. Okay. Yes, ma'am. So we have already done what you understand by a project. Who all had developed the techniques to make the network of the project. As I told you, it was done independently of each other. One was developed in Europe and another one was developed in USA. But they are very similar. Only difference is one is deterministic, it is mathematical. Whatever
project duration you calculate, it is that only. But the other is probabilistic, and you have 3 time estimate for each event or each activity. And from there you calculate the expected time. And whatever the project duration you calculate is only 50% chances are there that will be completed within that, because that follows a normal distribution. Normal distribution, the mean or the mode or the median, they are all the same and they lie at 50%. So we had done that both. And there's another way of doing it, finding the early start, early finish. All these things help you in crashing the project, where you shorten or monitoring the project, because these critical activities are very important. You have to put extra attention to these critical activities, otherwise your project will be delayed. So here we'll be talking about resource allocation. Shivam, you read it and share it with the class. Just 1 minute, I'll put it on slideshow. Shivam? Yes, ma'am. You read In it? project, yes, in project management, resource allocation or resource management is the scheduling of activities and the resources required by those activities while taking into consideration both the resource availability and the project time. What do you understand by it? Ma'am, the project management is there. 1 second, ma'am. Like you have broken up the project into different activities. For example, if you are throwing a party, so that party will also be broken up into different activities. First thing, you might decide what will be the menu of the party, what will be the theme of the party, what will be the date on which you will be holding that party. And then naturally for when you opening of the party, that means the guests have started coming. So what will you do? What all resources you will be required? Maybe you'll have a place where they can sit properly. That has to be decided beforehand and made it possible for them to sit over there. Then they'll be welcomed. Maybe you'll serve them drinks, soft drinks, or maybe some sweets, or just sweets and water, whatever is that is your choice. But these are what? Resources. Just like when you are doing a project for a factory, the resources will be different. But here I am talking a project for the family. Here the resources are different. The resources for first activity is welcoming the guest. So for welcoming the guest, what do you need? What resources you need? You need resources for making them sit properly, enjoy themselves, and then welcome them with either with sweets and water or some soft drink or whatever is your choice. So that are the resources. So this is the allocation of resources for the first activity. Then what will be the second activity? There might be some games or maybe music or whatever it is, some dance, whatever it is, then what all resources you require for that particular activity. So this way you can monitor whether your project is going on properly or not. Whether all the first activity was what? How much time it will require. If everyone is punctual, if suppose there are certain things which is beyond your control, maybe some guest comes very, very late, so your whole party will be affected by it. That is something else. But here we are talking about if they come within a certain
time period, then at that how much time that will require, so that you can properly make a diagram of the project and see what will be the duration of the project. I have already told you the longest path is the duration of the project. I had shown you the diagram that there are two friends, they meet at the breakfast and they have to meet again at dinner. And meanwhile, both have their individual work to do. So even if one friend finishes, suppose they meet at 7 o'clock for breakfast and then at 9 o'clock for dinner. So suppose one friend finishes his or her work before 9 o'clock, then but that person cannot do anything about it. The other person will come only at 9. So from 7 to 9, the one who takes that whole period, that will be the duration of the project. And that is the critical path. And that is why if you want to shorten that, you have to concentrate on that, those activities which are on the critical path. So here, naturally, there are several activities associated with the project. For example, if you're building a house, so what are the activities? Laying the foundation, then building the walls, doing the exteriors, things like that. So here, these activities, if what are the resources required for these activities? That is the resource allocation, so that you can know exactly, specifically, what all resources you will need, how much resources will be needed. Because in operations management, we are talking about two things constantly: effectiveness and efficiency, that doing the right thing in the right way. There should not be any wastage of resources. And at the right time, you should be using it. Whenever people, suppose somebody requires some, for example, I'm talking about a party. So in that party, if someone wants to have some snacks, so that should be served to that person. There should be people who should be monitoring the whole party and seeing to this that whatever the guests desire, that is being served. So this way, even if it's a big project, industrial project, constant monitoring is required. And see, suppose it's a construction project. So laying up the foundations, they had decided to build it in, do the foundation work in 4 days. So then it should be done in 4 days, as far as possible, until something unseen happens. But taking everything into consideration, some average time is taken and then the project is evaluated accordingly. So here, first of all, for each activity, what all resources you will require, that has to be allocated. That is the resource allocation. Anshaj, resource leveling. Resource leveling, a technique in which the start and finish dates are adjusted based on resource limitation with the goal of balancing demand for resources with the available supply. So over here, as I have told you in the earlier case, when you are making the network, you have to find out what is the earliest possible time to start an activity and what is the earliest possible time to finish that activity. And similarly, what is the latest time to start the activity and what is the latest time to finish the activity. And the difference between the two, I'm so sorry, I don't have electricity in my house and my UPS is also almost. So anyway, so for each activity, you should know what is the latest and the starting, latest finishing, latest earliest starting, earliest finishing, so that you can balance the resources accordingly. So for leveling, you should know that. Resource smoothing. Shashi has also come, na? Yes, ma'am.
So Shashi, you read. Yes, ma'am. Just a minute, ma'am. I have kept my Google. Okay, then Just I'm bringing. Just Subir, I'm bringing. Subir, you read. Ah, definition resource smoothing. Resource smoothing is used when the time constraint takes ए मेरा चश्मा उसमें priority. देखो तो जैकेट में हमको पढ़ने The objective is to complete the work चश्मा by the re- by the required date while बना अंदर आना while avoiding peaks and traps of resource demand. A smooth resource profile will be achieved by delaying some work. See, just 1 second. Resource constant. जैसे मान लो हमारा जो हम ग्राफ बना रहे हैं इस तरह से जा रहा है, कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ट्रफ है हाँ, कहीं पीक्स नहीं है, कोई ट्रस्ट तो आई वांट टू स्मूदन इट अप कि ये ज्यादा स्मूथ हो। ऐसा नहीं होगा कि वो सभी खत्म ही हो जाएंगे, मगर इट विल बी मोर स्मूथिंग। तो वो लेवलिंग के बाद ही आएगा। पहले तो हमने अपना अलोकेट कर दिया, फिर उसको थोड़ा सा स्मूथन किए तो लेवल पर आया, देन वी फर्दर स्मूथिंग, इट नोन एज रिसोर्स स्मूथनिंग। So this is a small project, because doing a very big project will become very complex. So we will be doing just a small project, which has got 8 activities: A, B, C, D, E, F, G. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 7 activities, and the immediate predecessor is also given. So first activity, immediate. Sorry. There's no immediate predecessor. Then A is the immediate predecessor of B, C, and D. B is the immediate predecessor of E. B and C both are immediate predecessor of F. That is, F cannot start until and unless both B and C are over. And B, E, F are the immediate predecessor of G. Okay. Now, duration of each activity is given to you. It is in days. It is in one time. Either you make it days, you make it minutes, you make it weeks, you make it months, you make it year. But every activity should be have the same unit. So this is given to you, and the laborers required to complete this. This is the resource over here. It can be anything. It can be laborer, it can be some machine, it can be any other resource, but over here I have taken laborers. So laborers, first activity, sorry, you require 3, for second you require 2, for third you required 4, for fifth you require 3, again 4, 2 and 4. This is given to you. And there is a constraint that you should not have 9 laborers per day. Not more than 9 laborers, sorry. You should not have more than 9 laborers per day. So let us see how you achieve this. ये diagram है. You can see, यहाँ हमने एक different, this is known as PDM, Precedence Diagram Method. Here what you do is you take this
एक्टिविटी ऑन नोड, मगर इसको वो गोल नोड नहीं बना के वी मेक इट अ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, कुछ भी बना सकते हो, रेक्टेंगुलर हो स्क्वायर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Each node is represented by a rectangle, and on that see, this is the rectangle, and on this the activity name is written A and duration 2. Similarly, B, C, D, E, F. Now I have drawn this diagram because A is the precedent of both, all three, B, C and D. C and D. D. Now B is the precedent of E and F. And so this is activity on node. So that is why we start से शुरू करते हैं. स्टार्ट से एक्टिविटी ए आया, फिर सी, बी एंड सी आर प्रेसिडेंट ऑफ एफ, एंड ई, एफ एंड डी ऑल थ्री आर प्रेसिडेंट ऑफ जी. जी के बाद खत्म हो गया, तो इट इज फ्रेश ओवर देयर. नाउ एवरी हियर दिस इज द अर्ली स्टार्ट and this is early finish. This is over here, it is late finish, late start and late finish. वहीं पर लिख देते हैं, कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है. From here you can make a column, but this is much easier because the diagram is also there, and writing the early start, early finish, late start, late finish also on the node only you write. And the difference between either both the starts or both the finish, which is known as slack or total float. You know that कि total float जहां 0 होगा, that will be critical path. तो ये path जो है A, C, F, G. This is critical path and it is denoted by red. You can calculate and also see. I'll send you the PPT. You can calculate and see कि ये 18 ये होता है और वो सब इससे कम है. Either 14 है या 12 है, इस तरह से है. So this is the critical path. Now, तो यहाँ देख लीजिए आप, ये स्टार्ट हुआ 2 है इसका, तो ये तो फर्स्ट है, तो स्टार्ट होगा 0 में, फिर इसमें ऐड करिए इसका, तो 2 हो गया. तो ये तीनों स्टार्ट होंगे जब A खत्म होगा, तो तीनों का 2 हो जाएगा. 2, 2, 2. इज इट क्लियर? अब उसमें जो उसका ड्यूरेशन है वो ऐड कर दीजिए. तो 2 + 4 6, 2 + 6 8, 2 + 9 11. अब इस पर आइए ई का ये भी है, बस ई का तो यही है, ई का बस बी है. तो बी का जब खत्म तब ई स्टार्ट होगा. तो इसका जो ये 6 है, लेट स्टार्ट विल बिकम अर्ली स्टार्ट फॉर ई. तो इट विल बी 6 + 5 11. अभी हम लोग फॉरवर्ड पास जा रहे हैं, अभी फिनिश का मत देखिए, केवल ऊपर का देखिए. यहां से क्या होगा, ये B and C both are predecessor of F. तो इसके दोनों का देखिए, ये 6 है, ये 8 है. तो ये तो तभी स्टार्ट होगा ना जब B और C दोनों खत्म हो जाएंगे. तो दोनों का जो मैक्सिमम होगा, दोनों हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी हो, द मैक्सिमम अर्ली फिनिश यू विल टेक एज अर्ली स्टार्ट ऑफ दिस. इसमें 6 है, इसमें 8 है, तो हमने 8 लिया बिकॉज दैट इज मोर देन 6. और उसका ड्यूरेशन क्या है 7, तो 15 आ गया यहाँ. अब इसका तीनों है, इसका 11 है, इसका 15 है, इसका 11 है. तो ये कब कहाँ स्टार्ट होगा 15, क्योंकि मैक्सिमम इज ओवर हियर and duration is 3. So it becomes 15 + 3 18. Is it clear? अब
ये फॉरवर्ड पास हुआ, अब फिनिश हो गया। अब यहां से देखिए तो ये लेटेस्ट इट विल बी फिनिश ऑन 18th, क्योंकि 18th को खत्म हुआ है, 18 डेज लगा है, तो 18th को खत्म हुआ है, तो ये 18 और उससे वो माइनस कीजिए 3, तो 15 आ गया। अब ये डी तो इसी का पहले है, तो डी का भी 15 होगा, ये 15, तो 15 ऐसे माइनस कीजिए 9, तो 6, उसी तरह ये 6 अभी यहाँ छोड़ दीजिए क्योंकि उसके पास और भी है। तो यहाँ आइए, इसका 15 है, तो ये भी 15 हुआ, ये भी 15 हुआ, क्योंकि तीनों ही इसके इमीडिएट प्रेडिसेसर है। तो 15, 15, 15 और उससे जो उसका ड्यूरेशन है वो माइनस करते जाइए। तो इसका तो 8 आया, इसका 10 आया, 5 माइनस किए 15 से 5, तो ये हो गया, आपका हो गया। अब आइए इस पर, तो ये है इसका, तो इसमें भी जो नहीं सॉरी ये है, उससे तो कोई कनेक्शन नहीं, ये 8 है, तो 8 यहाँ आया, 8 माइनस 4, तो 4 ओवर ये आ गया। फिर ये भी इसका है, तो इसका 8 है, actually I have forgotten to write over here, but it will be 8 over here and 2 over here. यहाँ 8 होगा, यहाँ 2 होगा, और इसका 15 है, इसका 15 है, इसका 15 माइनस 9, 6, उसी तरह सब निकल गया। और जहां पर भी इसमें क्या होगा ना, जहां 2 हैं तो यू विल टेक द मिनिमम। वन सेकेंड, जैसे ये 2 हैं, तो इसका 10 है, इसका 8 है, तो हमने मिनिमम लिया यहाँ 8, देखे। तो दिस वे you will see, if you take the difference between the late start and the early start, late finish and the early finish, it should come same. यहाँ 0 है क्योंकि 18, 18, 15, 15, तो ये 0 है, ये 15, 15, 8, 8, तो 0 है, ये 15 और 11 तो 4 है, 10 और 6 भी 4 है। इधर पर देखिए तो ये यहाँ भी स्लैक है, 15, 11 तो ये 4 हुआ, 6 and 2 4 हुआ, यहाँ पर जो रेड लाइन है सब 0 है। तो दिस इज द क्रिटिकल एक्टिविटीज एंड दिस इज द क्रिटिकल लाइन। यहां पर भी आपको स्लैक है, 8 and 6 का डिफरेंस 2 है, 4 and 2 का भी डिफरेंस 2 है। तो ये आपका you have found out all the early start, early finish, late start, late finish and slack. Because these things will help you in finding the resource leveling. तो यहां से हमें the processor is resource allocation पहले करेंगे, फिर resource leveling करेंगे, फिर resource smoothing करेंगे। ये उसी का बस टैबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है, जो पिक्टोरियल फॉर्म में लिखा था उसी को ये टैबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है ना। अब जो प्रोजेक्ट, द सेम प्रोजेक्ट हैज बीन रिटन इन एक्सेल। जैसे क्या था, पहला ए स्टार्ट था, हियर इज द एक्टिविटी, हाँ हियर इज द ड्यूरेशन। तो पहला एक्टिविटी 2 दिन का था, उसमें लेबर कितने यूज हुए थे, 3, तो दोनों दिन 3-3 लेबर्स यूज हुए। उसी तरह जब ये खत्म हो गया तब ये 3 शुरू हुए, बी, सी एंड डी, तो वहां पर भी आपको तो यहाँ 3-3 लेबर्स यूज हुए। इसमें 4 दिन तक ये एक्टिविटीज चली, तो ये 2-2 लेबर्स यूज हुए, ये
तो आपके 6 दिन चली एक्टिविटीज. All this information was given on the diagram and also in the table. तो इसमें 4 लेबल्स यूज हुए. उसी तरह फिर ये हुआ. अब ये शुरू कब हुआ, अर्ली स्टार्ट या अर्ली फिनिश, आपको पता चल जाएगा क्योंकि ये किस दिन हुआ, 7th डे. तो ये 7th डे को शुरू हुआ. तो 1 2 3 4 5 जितना वो हमने लिख लिया. फिर ये जो है सो डेज है 1 2 3 4 5. वो डायग्राम से पता चल जाएगा अर्ली स्टार्ट अर्ली फिनिश है कि कब कब स्टार्ट करना है कब फिनिश करना है. यू डोंट नीड लेट स्टार्ट लेट फिनिश. अभी वी जस्ट नीड early start early finish. So the same diagram has been written in a Excel form, and the number of laborers required per day is what, ये add कर लीजिए column wise. ये तो laborers है 3 2 2 4 4 सब laborers हैं. तो ये add करेंगे तो क्या होगा, 3 plus ये तो day है ना, तो इसको नहीं add करना, खाली laborers को. 3, this is 3, this is what, 2 plus 4 plus 3 9 10 9 9 हुआ ना. 2 3 हाँ, पर मैम, 4 9 7 हुआ. प्लस 2 9 हुआ ना. हाँ फिर ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा. ये 11 हो गया, हाँ ये 11 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया. वर्टिकली ऐड कर रहे हैं. हर एक एक्टिविटी में कितने लेबर्स यूज हुए वो ऐड कर लें. तो हमें ये मिला. तो यहां देखिए ये दोनों जगह 7th और 8th डे we are using 11 laborers, which we should not use because the constant was that you should not be using more than 9 laborers per day. तो यहाँ पर ये कांस्टेंट को, तो दैट मीन्स वी हैव टू रीअलोकेट. रीअलोकेशन का मतलब ही हुआ लेवलिंग. उस तरह से करें. यहाँ पीक हो गया ना 11 लेबरर्स, तो पीक हो गया, इसको हमें थोड़ा नीचे लाना है. इज इट क्लियर? शशि आप कुछ नहीं बोल रहे हैं. Are you Hello. there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, madam. Yes, ma'am. बोलिए मैडम. मैं आपको ना इसी डायग्राम को वर्ड में दिखा रही हूँ क्योंकि when I tried copying it, वो इसका कलर्स चेंज हो गए. I'm just 1 second, I'm showing you. ये वही डायग्राम है क्योंकि इसमें थोड़ा कलर दे देने से हमें पता चल रहा है कि विच आर क्रिटिकल पाथ. क्रिटिकल पाथ आर द पिंक पाथ. तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं. पिंक पाथ में हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज दे आर क्रिटिकल पाथ. इफ यू टच दैट योर होल ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट विल चेंज. तो यू हैव टू लुक एट द नॉन क्रिटिकल पाथ. तो पहला हमारा ये है नॉन क्रिटिकल पाथ, है ना. तो इसमें हमें 2 दिन का स्लैक है. आप डायग्राम में देख लीजिएगा, बाद में हम जब भेजते हैं तो आप एक बार फिर, क्योंकि यहाँ थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना, ब्लैक बोर्ड तो है नहीं. तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग इट ऑन द 2nd डे वी स्टार्ट इट ऑन द 4th डे. तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि स्लैक है उसके पास. तो इसको हम यहां से ना करके यहां को भी फिलअप कर देते हैं. एक्टिविटी बी को भी और एक्टिविटी ई को भी. ई को भी हम इंस्टेड ऑफ
because we have used total float is what? 4 plus 4, 8 days. We have only total float for, तो ये जो है इसका 4 है टोटल फ्लोट, मगर फ्री फ्लोट क्या है? क्योंकि 2 दिन तो ऑलरेडी यूज हो गया, तो ओनली 2 days आर लेफ्ट, तो इसको भी हम 2 दिन के बाद करते हैं। अब फिर देखते हैं क्या हुआ, हमारे लेबर्स में क्या फर्क आया। तो यहाँ देखिए आप वर्टिकली ऐड कीजिए, ये 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, ये 7 है, ये 9 9 9 9 9 9 सब ये 9 आया, ये 6 6 2 2 4 4 4। दैट मीन्स कॉन्स्टेंट इज मेंटेन्ड। आपने थोड़ा शिफ्ट कर दिया तो इसको क्या किया, स्मूदन किया ना, जो हमें पहले ना करके उसको बाद में कर दिया, तो वो हमें फिर से ये लेबरर्स को जो पीक जा रहा था वो पीक कम हो गया। तो नाउ आई डोंट हैव मोर देन 9 इन एनी ऑफ द कॉलम्स। तो दिस इज नोन एज रिसोर्स लेवलिंग। एक्चुअली यहाँ पर बहुत क्लियर नहीं है, बहुत छोटा आ रहा है एंड कलर भी नहीं आया है। तो सेम थिंग यू आर एडिंग अप 3 3 3 then 3 again 9 9 9 9। ये तो लेवलिंग वाला आ गया, अरे सॉरी अलोकेशन वाला। 9 9 9 यहाँ, फिर ये 6 6 2 2। एंड इसी का आप ग्राफ बना सकते हैं। फ्रॉम ग्राफ इट विल बी मोर क्लियर। ग्राफ का मतलब है कि आप एक्स एक्सिस में तो डे रखिए, एक्स एक्सिस में डे को रखिए, और वाई एक्सिस में नंबर ऑफ लेबरर्स रखिए। यू कैन यूज एक्सेल। एक्सेल में तो ग्राफ बनाना बहुत आसान होता है। Only thing you have to define what is your x-axis and what is your y-axis. I'll show you one second. जैसे हमने लिया ना एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस जो है ये एक्चुअली एल है लेबर्स। तो हमने लिया पहला दिन 3 3 9 9 9 फिर 11 11, इसी का फिर हमने ये ग्राफ बनाया। तो ग्राफ ये आ गया मेरा, इस तरह का ग्राफ आया। 3 फिर 9 4 days है, फिर 11 2 दिन है, फिर 9 3 days है, देन 2 है 4 days 4 एंड सो ऑन। ये ग्राफ आ गया। अब इसी का जब हमने स्मूदन अप कर लिया, जब 2 दिन घटा बढ़ा दिया, बिकॉज देयर वाज स्लैक ओवर देयर, तो ये ग्राफ आ गया। तो देखिए उससे ये थोड़ा सा स्मूदन है। यहाँ कोई पीक नहीं है, 11 का कोई पीक नहीं है। 9 is there, 7 is there, 3 is there, and the constant is also maintained. अब डी में फिर स्लैक है, 4 days का स्लैक है, तो वहां हमने किया, अब थोड़ा और बढ़ाया। ये तो इसका पहला ग्राफ आया। दूसरा ये आया जब हमने बी एंड ई दोनों जगह 2 दिन बढ़ा दिया, तो हमारा ग्राफ जो आया सो इस तरह का आ गया। तो अब हमारे पास कोई पीक नहीं है।
अब now I have got D, where there is a slack of 4 days. तो उसको भी हम बढ़ा दिए अलग. तो now my 4 days, free float of 4 days. तो अब जो हमने बनाया तो ये ग्राफ आया. इससे हमें देखिए कहीं कहीं तो ये फायदा हो जाता है कि लेबर पर, इफ यू आर पेइंग लेबर्स पर डे के हिसाब से, तो उनका नंबर यदि पर डे कम होगा तो naturally you will have to pay less. So you will be cutting the total cost of the project, reducing the total cost of the project. Plus, जो भी constraint है, maybe the constraint is that you cannot find it more than 9 neighbors per day. So then that also will be taken care of. Whatever is the reason, for whatever reason that constraint has been given. So this is known as smoothing. So this is the graph. So the graph you have to make on x-axis you have the days and y-axis you have the number of labors. Have you understood this? कुछ पूछना है तो पूछिए. For this you have to use Excel. जो एक्टिविटी को हमने एरो से और नोड से दिखाया था, तो दो दिन का है, तो ये 2 ब्लॉक्स ले लिए, सेल ले लिए. दिस इज व्हाट वी कॉल इन एक्सेल ना सेल. फिर ये जब खत्म हो गया तब तीनों स्टार्ट हुआ. तो इसके जितने भी सेल चाहिए, हर एक का अलग अलग है. इसका 4 है, इसका 6 है, इसका 9 है, डी का 9 था. तो उतने सेल हमने भर लिए. मगर when will the other activity start? E के बाद A, B, C, D. E कब start होगा? तो that will be the early start of E, which we have shown in the first one. E यहाँ start हुआ 7th day को. उसी तरह, क्योंकि here I have written the day, so from here you know कि it will start on the first day. 0 हम लिखते हैं, मगर actually it is first day. लिखने को 0 लिखा जाता है, but on the graph you will not show 0. You will show first day. So it is taking say 18 days. फर्स्ट डे से शुरू किया, इसीलिए उसमें तो 6 दिखा रहा है, here it is 7 days. 7th day it is starting. Then F is starting on 9th day. G is starting on 16th day. And it takes 3 days to complete that. So 16, 17, 18. It takes 2 days to complete A, so it is 1 and 2. It takes 4 days to complete B, so it is 3, 4, 5, 6, and so on. हर एक को आपको हॉरिजॉन्टली दिखाना, एंड दैट इज ऑन स्केल. पहले जो था ना वो स्केल पर नहीं था. जो हमने डायग्राम बनाया, इट इज जस्ट गिविंग यू अ व्यू कि हाउ थिंग्स आर मूविंग, बट इट इज नॉट शोइंग यू इट ऑन स्केल. जैसे हमने जब डायग्राम बनाया, ये अब हमने तो दिखा दिया ये तीनों एक ही साथ हैं, मगर नहीं है ना. ये 4 days है, ये 6 days है, ये 9 days है. तो but in that, when I am showing it on the Excel sheet, it is on scale. 3 days, 2 cells. 4 days, 4 cells. 6 days, 6 cells, and so on. So you know exactly how the project is moving, and you know how many days it will take to complete the project. And then from there, you can calculate how many labors will be required per day. And then you can see here
2 days, there are more than 9 neighbors. So how do I smoothen it up or level it up? So where should I go? I should go to non-critical path. So first is this B. So instead of starting on 3rd day, let us start it on 5th day. 2 day का slack है ना उसके पास, हमने कैलकुलेट किया था 2 days का slack है, तो I have shifted it to the 5th day and the project will not be affected क्योंकि उसके पास slack है. Even like for example, as I told you, if the 2 friends, if another friend he has a slack of 1 hour, तो 1 hour में कुछ भी कर सकता है, जाके कहीं पर मूवी देख ले, किसी फ्रेंड से मिल ले, बैठ के म्यूजिक ही सुन ले, कुछ भी कर सकता है ना, because he knows कि even if I have completed all my work by 8 o'clock, मगर my friend will not be there for dinner before 9, so what should I do for 1 hour? That I can do anything. उसी तरह है यहाँ पर, ये इस एक्टिविटी में स्लैक है, इसलिए इसको हम 3rd डे की जगह 5th डे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो my project will not be affected. And then when I have recalculated, I have seen कि it has smoothed up, it has leveled up. ये तो जो non smoothing, just resource allocation है. Then over here ये भी 2 दिन का यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको भी हमने स्टार्ट किया है 2 दिन के बाद. तो जब स्मूथनिंग करने के बाद ये रिजल्ट आया है. दिस इज द रिजल्ट. फर्स्ट 2 days 3377 999 666 222 444. तो यू सी कि वहां अब इसमें कोई भी, it is not violating that constraint which is given to you. अब डी में भी स्लैक है 4 days का, तो डी, तो अब जो स्मूथ हुआ है फ्रॉम, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू फ्रॉम लेवनिंग यू कैन गो टू स्मूथनिंग. कोई खास फायदा नहीं भी हो सकता है, पर कहीं हो भी सकता है. इट विल डिपेंड अपॉन द प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, बट दिस इज अ टेक्निक थ्रू विच यू कैन स्मूदन level the troughs and peaks. I hope I made myself clear. यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. Madam, it will take some time to understand. It will take some time and you will have to do it yourself. जब तक आप अपने आप से बैठ के नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये बहुत इजीली अवेलेबल भी नहीं है. कैलकुलेटिव थिंग है सब. हाँ, कैलकुलेटिव थिंग भी है और बुक्स में भी ना इजीली अवेलेबल नहीं है. जैसे ऑपरेशंस रिसर्च, it is part of operations research which is used by production management, या किसी भी प्रोजेक्ट के लिए यूज होता है. But even in, you will not find it easily in any most of the books. बहुत रेयरली किसी किताब में वो भी इतने डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है. They'll just mention it कि हाँ प्रोजेक्ट लेवलिंग होता है, प्रोजेक्टिंग स्मूथनिंग होता है, but how it is done, in very few books it has been explained. Very important this thing. No madam, it will take time. हम लोग ठीक कर, कोई दिक्कत नहीं है. हम ये पीपीटी भेज देंगे, आप लोग खुद एक बार अपने आप कीजिए. ओके मैम. Okay, ma'am. You can also look up several problems on the net and try it yourself. Okay. Okay. Okay, ma'am. So should we start a new topic? या आज good night कह दें? This is a heavy topic. मैडम, मेरा ये रिक्वेस्ट था कि एक्चुअली वी फ्री फ्रॉम हेल्थ केयर फैसिलिटी. देखिए, हेल्थ केयर हो या
सोलर सिस्टम हो या ऑटोमोबाइल हो, प्रोजेक्ट तो सब जगह है. हाँ, everywhere I'll is show an you. is- I'll is show you it. just 1 second. I'll show you a diagram जो हमने हेल्थ केयर के लिए ही बनाया था. Just These one. all are useful for us, I know. But something related from healthcare, हाँ. it will be better for I us. was going to do that. ये खत्म, पहले बेसिक्स तो जान लीजिए. नहीं, okay. भी दिखाते हैं, 1 मिनट. Actually, we also have a paper, PG diploma in healthcare management system. So in that I was Yes, teaching information system. What are the healthcare? So this is one diagram I had drawn. एक ये inpatient inflow है. You can see Yes, ma'am. कि registration हुआ. Nice. हाँ. Yes. I just show. यह रजिस्ट्रेशन हुआ. रजिस्ट्रेशन के बाद नेचुरली फीस आपको देना पड़ता होगा. कुछ एडवांस दीजिए और कुछ हो सकता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो, क्योंकि आप लोग हेल्थ केयर से आते तो यू मस्ट बी नोइंग इट बेटर. बट दिस इज, तो फिर बेड अलॉटमेंट हो जाता है. इन पेशेंट की बात कर रहे हैं, नॉट अबाउट. देन इन्वेस्टिगेशन होगा. इन्वेस्टिगेशन होगा तो डायग्नोसिस होगा. डायग्नोसिस का जो रिपोर्ट आएगा उसके हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू होगा. ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद सब पोस्ट ट्रीटमेंट केयर जरूरी है. तो फिर अभी क्लिनिकली डिस्चार्ज हो गया, बट नॉट फुली डिस्चार्ज, बिकॉज वो जो पेमेंट का फाइनल पेमेंट जब हो जाएगा, देन ओनली द पेशेंट विल बी फिजिकली डिस्चार्ज. Yes. तो ये एक प्रोजेक्ट है. शुरू हुआ, वो आया, पेशेंट हो गए और गया ठीक होकर. इसमें ये सारे एक्टिविटीज हैं. तो एक एक्टिविटीज के हर एक पेशेंट का अलग अलग होगा, मगर होंगे तो ये एक्टिविटीज ना. Yes. तो यू कैन मेक एन एस्टिमेट कि एक पेशेंट को कितना समय लगेगा ठीक होने में, यदि इस तरह की बीमारी है. तो इसमें आप कहाँ उसको क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत है, तो कहाँ क्या चाहिए, अलॉटमेंट उस तरह से करना पड़ेगा. Yes, ma'am. वही मेरा कंसर्न नहीं है कि जो आप दे रहे, मतलब ये तो सभी जगह यूज होगा. मतलब कि बीच में थोड़ा सा टिप, मतलब हेल्थ केयर से रिलेटेड भी ऐसी दे देना है थोड़ा सा. नहीं, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो. मेरा आगे का प्रोग्राम यही है कि हर एक को हम जिसकी जो फील्ड से रिलेट करके बताएं. यस मैम. क्योंकि आप लोग हेल्थ केयर से तो 3 हैं. यस मैम. तो दिस इज द एक्चुअली दिस आई हैड मेड फॉर माय, जब मैं पढ़ाती थी, अभी तो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, मगर उस समय जब पढ़ाया था तो ये हमने बनाया था ये. तो आई थॉट कि आई विल शो इट टू यू कि हाउ द फ्लो इज. एक टिपिकल है, ऐसा नहीं है कि हर एक में एग्जैक्टली यही होगा, बट दिस इज द फ्लो ऑफ वर्क इन एनी हेल्थ केयर सेंटर, whether it is a big hospital, a small hospital, or a clinic, or whatever it is. Yes. तो you know कि how much time will be required to registration पे क्या टाइम लगेगा, पैसे का कैसे से इंतजाम होगा, एडवांस देना होगा, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के थ्रू देना होगा, तब बेड अलॉटमेंट होगा, and things like that. Yes. तो हम लोग कोई प्रोजेक्ट करेंगे हेल्थ केयर पर, ठीक है शशि जी? ओके मैम.
Okay, madam. Subir, you are also in healthcare. Subir, I think he is not listening. He's We three doing from something we else. three, He's we three from healthcare organization. So, नहीं अब जो भी you are teaching all based on project management, ये हम लोग को अच्छा हेल्पफुल कर रहा है, इसमें कोई दो, लेकिन वही मैं बोल रहा बीच बीच में जैसे आपने एग्जांपल दिया ना हेल्थ केयर से रिलेटेड, तो सम टाइम यू कैन गेट. नहीं आई विल बी डूइंग दैट क्योंकि ऐसा है कि अभी शायद वो सुकुमार जी ने भी आप लोगों को एक केस स्टडी दिया है ना हेल्थ केयर पर. वो मिला है हाँ, वो क्वालिटी को लेके है, हेल्थ केयर का क्वालिटी को लेके, मतलब अच्छा क्वालिटी को लेकर है क्योंकि ही विल बी टीचिंग ऑन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. Yes. Actually, he is a trustee of some hospital also. Yes, he told. So that for him it will be like he can talk about lot about healthcare. I am not associated with any. It is only from BHU and some other places which I have got all this material. So I'll be sharing all this with you. Don't worry. Okay, ma'am. Okay. So should we start maintenance management today? Or should we leave it for... नहीं मैडम, कल करते हैं. कल तो करेंगे सुकुमार जी. अच्छा ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे करेंगे. नेक्स्ट सैटरडे स्टार्ट करेंगे. ठीक है. और बीच बीच में आई बी ब्रिंगिंग दिस थिंग्स, हेल्थ केयर पर हो चाहे ऑटोमोबाइल पर हो या और कौन है ऑटोमोबाइल पर हो ना, अंसज. तो yes, Ansaj is from automobile. ऑटोमोबाइल. पर ये वाला फ्लो डायग्राम लेकिन बहुत अच्छा है. ऐसे ही है सेम हम लोग का. हाँ टाइम तो लगा था मगर ठीक बन गया है. हाँ सेम ऐसे ही होता है हम लोग का यहाँ भी. तो ये कि फ्लो चार्ट में हम लोग देखे नहीं थे कभी. बहुत बढ़िया. Then next class, madam, what will it take? Next class? I'll take maintenance management क्योंकि जो इक्विपमेंट है उनको तो मेंटेन करना बहुत जरूरी है ना. आप हेल्थ केयर में हो या किसी प्रोडक्शन लाइन में हो, कहीं भी हो, घर पर भी हो, तो घर में भी हमारे कितने इक्विपमेंट्स हैं, सबको मेंटेन करके रखना पड़ता है. Yes. They are not maintained, the productivity will be lost. Yes, definitely. Okay, for this week, so good night. I'll start maintenance management next Saturday. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Meanwhile, I'll be sending you this PPT. You go through it and try to do yourself. Manually, you try to do it. Then only it will be clear. Yes, ma'am. Okay, thank you. Okay, good night. Good night. Good night, ma'am. Good night.